औसत -2 हुआ हुआ है हमें। Hey friends, marhaba and assalamu alaikum. Hope you all are having a very good day. May Allah Pak save you from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome to the new video of the Turkey series. So far, the road trip of different places in Turkey is going full of enjoyment. In the last vlog, I have shared my trip of a great place, a historical place, that was Eskişehir, and the beautiful Sazova Park. I hope you all must have enjoyed it. Our stay in Eskişehir was just for one day, and the temperature dropped to 0 degrees, which was almost freezing, but we thoroughly enjoyed. So today, we are on our way to Bursa, which is a large city in the northwest Turkey, lying in the foothills of roughly 2,500 meters high near the Sea of Marmara. Bursa is well known for its mosques and historical sites from the early Ottoman Empire. We will be visiting the Uludag Mountain today, which is 8,300 feet high, and we will be going through a cable car. This time, inshallah, we will have full luxurious. Bursa TeleFerik is the first cable car line in Turkey and the longest one. It has 4 stations and takes 22 minutes to reach 400 meters to 1800 meters height. Its price is 130 Turkish liras per person for round trip for the locals, but for foreigners it costs 490 Turkish liras for the round trip to Uludag Mountain. ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट तक जा रहा है, सेकंड पॉइंट क्लोज। तो सही है, फर्स्ट पॉइंट से हमने वापस आना है ना? फर्स्ट पॉइंट से हमने वापस आना है और जाना और आना दोनों है। और फर्स्ट पॉइंट क्लोज क्यों है? बर्फ की वजह से ऊपर। बर्फ की वजह से पैसे लेकिन पूरे ले रहे हैं। कितने की आई एक टिकट? 490। ऑलमोस्ट 500 की है। 500 की है क्या? 2500 2400 समथिंग की हम सबकी आई। So here we thought to buy popcorns for our tour to Uludag Mountains in TeleFerik. And the person selling popcorns tried to cheat us. The price of the packet of popcorn was only 40 Turkish liras and we paid him 200. Since we were not having the change, and instead of returning the balance amount of 160 liras, he was only giving us 10 liras back by saying that we have given him 50 liras only. यहाँ पे स्कैम होता है इस किस्म का, ठीक है ना? You have to be very careful. वीडियो बनाएं आप इन लोगों की सबकी। This is the first time we have faced such a scam in Turkey. Normally these people are not like that, but I don't know what happened this time. Anyways, later maybe he realized his mistake and came to apologize to us. Here we were lined up in a queue and waiting for our turn to get into the TeleFerik and start our exciting tour.
It was a truly fantastic experience being there in the cable car. It gives you the feeling of being there on cloud 9, riding up the mountains and reaching the highest point. This telepheric ride is highly recommended if you are planning a trip to Turkey. My kids felt excited. They were amazed by watching the scenic views of the mountains in Bursa. Here we stopped at the station 1, but we were not allowed to get down as it was closed due to some renovation going on. And after around 8 to 10 minutes, the cable car started to move towards the station 2. As we were approaching towards the top point, we witnessed the snowflakes lying on the land, which was giving an enchanting beauty to the mountains of Bursa. We also witnessed that the snow lying on the ground is not just a visual, but it also has an impact on the ecosystem of the region. Finish? Yes. Then return? It was indeed a breathtaking view. This snowfall transforms the mountains into a place of tranquility and solitude. अच्छा खासे टूरिस्ट भी आए हैं. The snow dampens the sound, creating an atmosphere of stillness and quietness. It was a place where one can find peace, escaping the hustle and bustle of the city, and find solace in the majestic beauty of nature. आप बैठो. तो आज हम बुरसा आए हुए हैं और बुरसा का टेम्परेचर इस वक्त -2 हुआ है. हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतनी बर्फ़बारी हो रही होगी, बट इट्स वंडरफुल. इट्स लाइक फीलिंग लाइक वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का मौसम है. और आप ट्रीज़ जिस तरीके से खड़े हुए हैं झाड़ियों में, ये इस तरह हम लोगों ने पिक्चर्स में ही देखा था. और इट्स जस्ट ऑसम. हम केबल कार के थ्रू यहाँ ऊपर सबसे टॉप माउंटेन के ऊपर आए हैं और ये जो है हमें जन्नत का ही कोई नज़ारा दिखा रही है. तो एंजॉयमेंट हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करें हमारे साथ. इट्स टू गुड. वो ये बुरसा की टेलीफेरिक है और तकरीबन हाफ एन आवर का टूर था इसका, जिसमें हमें टॉप माउंटेन पीक पर पहुंचाया. और सीन जो है वो बिल्कुल, मैं स्पीचलेस हूँ यहाँ पे कि मैं क्या कहूँ. मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस खूबसूरती की तारीफ़ करने के. गाइस बहुत सर्दी लग रही है, बच्चों की हालत बुरी हुई हुई है और डेटा की भी. हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे. बिल्कुल हमारे पास जो है वो कोट्स वगैरह नहीं हैं. हमने सिंपल स्वेटर्स और जैकेट्स पहनी हुई हैं. और पैर फ्रीज इस वक्त फ्रीजिंग. चलो बस चलो कट. वापस कैसे जाएंगे? उसी से
टेलीफेरिक से वो बंद हो गई है। नहीं ये वाली ऊपर वाली बंद हुई है, वो है। तो चलो ना, खेलने वाला है। स्लिप नहीं होता ना भाई। रुक जाओ। मैं इनको बोला कि Here we bought a souvenir from Uludag Mountains shopping area. It was a family tree where our names were written, along with the area we visited, so we can recall our memory whenever we want. Trust me, it was a beautiful souvenir. Okay. Next year will come 24. Inshallah. It was time to go back finally, as the TeleFerik closes at 6 p.m. So before that, we had to leave. It was such a beautiful place and we wanted to spend some more time here, but we had to go back before the time ends. ये है जी हमारी वापसी का सफर। इसके साथ ही हमारा बुरसा का ट्रिप जो है वो एंड होता है। ये हमें वो कह रहा था कि 1000 लीरा में आपको प्राइवेट केबिन मिलेगा। नॉर्मल टिकट फ्री में नहीं, नॉर्मल टिकट में वही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हमें देने पड़े। और अब हम एज अ फैमिली जो है वो इसमें जाने लगे हैं। बहुत मज़ा आया। इट वॉज जस्ट टू गुड। बर्फ देखो। और स्नोफॉल ने तो हमारा जो है वो ट्रिप बहुत मज़ा आया। ट्रिप हमारा जो है वो एक्सक्लूसिव बन गया स्नोफॉल की वजह से। अच्छा, ये जो है ना, लोगों को यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पता था कि यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। हाँ। इसी वजह से आज वीकडे है, हालांकि थर्सडे आज पैक था और -2 -3 था इस वक्त टेम्परेचर। और सनसेट देखो। और सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओह बैठ जाओ। अब देखते हैं बुरसा की थोड़ी सी सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। मॉल जाना है, यहाँ पे एक शॉपिंग मार्केट है, वहाँ जाना है। तो साथ साथ जो है वो वीडियो भी बनती रहेगी। व्यू एंजॉय कीजिए बस। तो जब आप लोग यहाँ पर आएँ तो टाइमिंग्स का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऊपर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए और वाकई बंदे का दिल नहीं चाहता वापस जाने के लिए। तो आप लोग प्लीज टाइम मार्जिन रखिए, जब स्नोफॉल हुई हो तो फिर तो, और स्पेशली जब स्नोफॉल हुई हुई हो, जैसे ये जो आपका दिसंबर जनवरी और दिसंबर जनवरी फरवरी का जो टाइम है वो बहुत ही ऑसम रहता है। इट्स ब्यूटीफुल। ज़रूर आइएगा और अपनी फैमिली के साथ आएँ और आके बुरसा की टेलीफेरिक का ट्रिप एंजॉय करें। क्या अल्लाह की कुदरत है। मजा आ गया, मूड अच्छा हो गया। हैप्पी मूड अच्छा हो गया। कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी ट्रिप के बारे में?
बहुत अच्छा रहा और क्रिसमस और न्यू ईयर के करीब आने का अपना मज़ा है। बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई है, और देखो ज़बरदस्त डेकोरेशन ये क्रिसमस की डेकोरेशन हुई क्रिसमस की और न्यू ईयर की भी न्यू ईयर की भी हुई हुई हैं। इसमें जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बर्फ़बारी, ऊपर बर्फ़बारी भी मिल गई। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मल आप लें, इधर खड़े होकर पिक्चर ले सकते हैं। हाँ आ जाएं लेते हैं आ जाएं। ये मेमोरी है आ जाएं आ जाएं। So Bursa was formerly known as Bursa, and its original name was Bursa city in northwest Turkey. Bursa is famous for its beautiful mosques. Bursa is also famous for its silk trade, and visiting Silk Museum is a must. It has gained a lot of popularity in recent years as a rising star in both tourism and foreign house sales. It is the fourth most populous place in Turkey. So this was our short trip to Bursa. I hope you all have enjoyed this video. It's a completely amazing place and you all must visit it. It's highly recommended to visit Bursa. So friends, if you have liked this video, please like and subscribe to my channel and share with your friends and families. So see you in the next vlog. Take care. Allah Hafiz.